Hare Krishna, Jai Jagannath. So welcome you all. So आज हमें पढ़िया जाऊँ regarding the appointments mainly. Who is who? Basically, currently in 2021, the important appointments or important posts held by persons. So it is very important for the ASO High Court exam basically, and of course other exams as well. But ASO High Court mainly कौन सी who is who almost पांचटा 10टा क्वेश्चन पचारुचे. So यार मैं mainly दुईटा की तीनटा पार्ट बनेबी. Okay, so it will help you all. So basically आज ही होची 27th September, right? 27th September 2021. तो आज के हिसाब रे almost everything is updated. But still यदि किसी कोई problem के पाइबो किसी mistake, then you can like mention it in the comment section. But mostly like 99% I had checked it. Okay, so let's start. So President of India, as you know, Mr. Ramnath Kovind ji. So he is the 14th President of India. Article 52 Constitution of India mention regarding the President of India. Yadi pacharibo ko article from the Constitution of India tells about the there should be a President of the Republic of India. That is Article 52. So currently Ramnath Kovind is the 14th President. Past President, all of you know who? Rajendra Prasad, right? And like some, it can be asked like first Governor General वगैरह तो तुम्हारा पढ़ेगा history रे. But basically after independence, if you'll ask like after independence, first Governor General of India then who will be Mountbatten. And first Indian Governor General of India, then who will be it? It is your Sri Rajagopal, right? Okay, Vice President of India, Article 63 tells about Vice President of India, Mr. Venkaiah Naidu is the 13th Vice President currently. Okay, I'm not it. Okay, mouse. Let's see, mouse which has to be. Spotlight. Let's see. Okay. So yes, President of India हो गया. Then Vice President of India is Mr. Venkaiah Naidu, 13th Vice President of India, and Article 63. So Article 52 President, 63. गोटे गोटे बढ़े देले 5 6 हो गला 2 3 हो गला 63 Vice President of India. Okay. Then Prime Minister of India गोटे गोटे बढ़े देले 6 to 7 3 to 4. Article 74 Prime Minister of India. Currently Mr. Narendra Modi is the 14th Prime Minister, right? Chief Justice of India, Article 124. अरे एठी केमते हो गला एटा. Okay. Chief Justice of India, Article 124, Mr. Sarand Arvind Bobde, 47th. Okay, currently it's Mr. N.V. Ramana, he is the 48th CGI. Article 124 said about the Chief Justice of India and Supreme Court. So Mr. N.V. Ramana is the 48th, 48tama CGI. And Mr. H.G. Kania was the first CGI. Okay, so first and current sabutre man rakhiwa better. Okay. So Mr. N.V. Ramana is the current, which is the 48th, and H.J. Kania, Harilal J. Kishan Lal Kania is the first CJI. Okay, this was working. Huh? Okay, Attorney General of India, Mr. K.K. Venugopal, 15th. So currently, who is holding the Attorney General of India post? It is by K.K. Venugopal. He, like Attorney General of India directly government appoint kare. Okay, Article 76 mentioned about the Attorney General of India, who is the first law officer of the union government. And who was the first Attorney General of India kiye thile? That is Mr. M.C. Sittalwad. Okay, so first CJI thile H.J. Kania, currently N.V. Ramana, और Attorney General of India एबे किए होछन्ती K.K. Venugopal, और प्रथम किए M.C. Sittalwad. Now Solicitor General of India is Mr. Tushar Mehta. Currently, who is the Solicitor General of India? Solicitor General is Mr. Tushar Mehta. He is the second law officer of the country, because he assists Attorney General. So Solicitor General of India तांको भी assist करंती तीन जण sorry तांको assist करंती किए Additional Solicitor General of India. Okay, तो ये जो Solicitor General of India गोटे हला statutory post, but Attorney General of India constitutional post because Article 76 में mentioned अछि. Okay, so okay statutory यहाँ पे लिखा है, and assist the Attorney General, and assisted by whom? Additional Solicitor General of India. Okay, now come to Odisha. Because Odisha
बेस्ट एग्जाम पे हमें डिस्कशन करछु तो ओडिसा रो भी इंपोर्टेंट जिंस हम जानि दरकार गवर्नर ऑफ ओडिसा आर्टिकल 153 हला सी मैक्सिमम तुम यदि देखियो कंपैरिजन करियो यूनियन गवर्नमेंट एंड योर स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम तुमरो 89 प्लस कर देले सिमिलर काइंड ऑफ आसी जाए हला जेम कि प्रेसिडेंट थिला कोन 52 ना कोन थिला राइट तो 52 एटा किंतु 91 हे होछि ना ओके 153 आर्टिकल 153 तो मैक्सिमम कोन होय जे कि जेमति 74 थिला तुमरो कोन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिसा तुम देखो 163 माने चीफ मिनिस्टर पोस्ट उडा 163 होछि 74 प्लस 89 कले 163 होछि हला ओके सो गवर्नर ऑफ ओडिसा एबे कि होछन मिस्टर गणेशीलाल प्रोफेसर गणेशीलाल ही इज द 26th गवर्नर ऑफ ओडिसा फर्स्ट गवर्नर बिफोर इंडिपेंडेंस यदि पचरा जी ओडिसा रे के थिले सर जॉन ऑस्टिन हुबक तो ये जो 1936 फर्स्ट अप्रैल जतले ओडिसा गोटे इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नो तो कोन का जो सेपरेट प्रिंसली स्टेट हला सेपरेट प्रिंसली स्टेट नो सॉरी सेपरेट province under the British India only हला ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे ही ब्रिटिश इंडिया अंडर रे ही गोटे सेपरेट प्रोविंस हला ओडिसा केबे 1 अप्रैल 1936 जो कि हमें उत्कल दिवस मनोचे तो सेते बेले के गवर्नर थिले सर जॉन ऑस्टिन हुबक यदि आफ्टर इंडिपेंडेंस पचारियो हु वाज द फर्स्ट वन मिस्टर कैलाशनाथ काटचू तो जॉन ऑस्टिन हुबक मिस्टर कैलाशनाथ काटचू हला हुबक हेला तमरा बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस को कैलाशनाथ काटचू और आर्टिकल रिमेंबर 153 प्रेसिडेंट को केथिला 52 चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिसा 163 आर्टिकल हला प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया केथिला 74 हला करंटली मिस्टर नवीन पटनायक एवरीवन नोज 14th चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिसा से हिंजिली सीट उठी होंती जनरली हला हिंजिली गोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी अछि इन ओडिसा मिस्टर हरे कृष्ण महताब वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस हरे कृष्ण महताब उत्कल केसरी हरे कृष्ण महताब एंड इफ इट विल आस्क फर्स्ट चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और प्रीमियर हला कोडी चीफ मिनिस्टर लिखा ही पारे प्राइम मिनिस्टर भी लिखा ही पारे हला और प्रीमियर लिखा ही पारे बिफोर इंडिपेंडेंस देन इट विल से कृष्ण चंद्र गजपति महाराज ओके से जे कि पारला के मुंडी रो राजा थिले जहां को आंचल गजपति डिस्ट्रिक्ट आल्सो हिचे वेरी प्रोमिनेंट फिगर हला सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बिफोर इंडिपेंडेंस इज कृष्ण चंद्र गजपति महाराज नारायण देव भी लिखा था basically full name is Krishna Chandra Gajapati Narayan Dev. Gajapati was the title basically. Okay. And okay, Mr. Vishwanath Das, he was the second chief minister before independence, you can say. Jota ki inter Congress basically election aitla 1937 re based on the Indian independent Government of India Act 1935. Ta answer 1937 to 39 basically jo provincial government jeti thila seman ka proper election heithila. Okay. तो से टाइम रे ओडिसा रे के थिले एनसी तो लीड कला 37 to 39 विश्वनाथ दास वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिसा एंड फर्स्ट के थिले कृष्ण चंद्र गजपति एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस हु हरे कृष्ण महताब होला बेसिकली हरे कृष्ण महताब जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस थर्ड भी यू कैन से थर्ड बिफोर इंडिपेंडेंस एंड फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हरे कृष्ण महताब होला सो कृष्ण चंद्र गजपति हरे कृष्ण महताब एवरीवन नोस बट विश्वनाथ दास nobody like बेसी लोग जान थांती सो रिमेंबर दिस नेम आल्सो मिस्टर विश्वनाथ दास Chief Justice of Odisha High Court, Article 214. So currently, who is the Chief Justice of Odisha High Court? Mr. S. Muralidhar. He is the 33rd, 33tamo Chief Justice of Odisha High Court, and Mr. Bira Kishore Roy, who is the first Chief Justice of Odisha High Court. See, tomorrow 26th July 1948 to 30th October 1951. Right, basically 26 July 1948 रे Odisha जो High Court separate हला, कटक रे माने start हला basically. ता पूर्व पटना High Court under थिला. ता पूर्व कलकत्ता राइट सो करंटली केते जण हाई कोर्ट जज को पोजीशन अछि ओडिसा हाई कोर्ट रे कटक बेसिकली 27 टा सेत्रु 20 टा परमानेंट 7 टा एडिशनल ओके सो आर्टिकल 214 इज द आर्टिकल फॉर हाई कोर्ट्स एंड 124 इज द फॉर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट जेम कि तमरो अटॉर्नी जनरल थांती फॉर योर यूनियन गवर्नमेंट सेवरी स्टेट पई एडवोकेट जनरल तो सेट जेम 76 थिला जदी प्लस 89 करिवो आर्टिकल 165 आसीबो हला बेसिकली सो आर्टिकल 165 इज फॉर एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट so currently who is the advocate general Mr. Ashok Parija the first pachariya first advocate general state ro ke thile Birakishore Roy only so Birakishore Roy is the first advocate general of Odisha and also first chief justice of Odisha High Court hela okay okay then speaker of Lok Sabha so currently who is the speaker of Lok Sabha Mr. Om Birla 17th basically Lok Sabha chalchi hai 17th
लोकसभा सेतरे की अछन स्पीकर मिस्टर ओम बिरला से कोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी बेसिकली बीजेपी राइट एंड मिस्टर गणेश वासुदेव मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा तो भारत स्वाधीन होला परे फर्स्ट स्पीकर के थे लोकसभा जी भी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर एंड इफ इट आस्क फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मिसेस मीरा कुमार ओके सी 2008 पाखा थिले कांग्रेस बेसिकली यूपीए गवर्नमेंट टाइम रो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा ओके सो लोकसभा रे जेंति स्पीकर थांदे डेप्यूटी स्पीकर भी थांदे राइट तांको एब्सेंस जे लीड करंती सो करंटली इट इज वैकेंट बेसिकली कम्स फ्रॉम द बेसिकली डेप्यूटी स्पीकर गोटे कन्वेंशन अछि पार्लियामेंट रे कि ऑपोजिशन पार्टी रो ही आसीबो तमरो डेप्यूटी स्पीकर पोस्ट सो दिस इज द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री दैट in the 17th lok sabha रे vacant अछि डेप्यूटी स्पीकर ओके तांको पूर्व 16th बेले थिले एम थांबी दुराई करू जे कि एआईएडीएम के रो थिले हैला बेसिकली दिस इज लाइक ऑपोजिशन पार्टी राष्ट्र जेंति कहली एंड फर्स्ट अगर डेप्यूटी स्पीकर इतना तो पूछता नहीं है फिर भी मिस्टर एम ए अयंगर हैला फर्स्ट स्पीकर इंडिया का जीवी मावलंकर ये पूछता है एग्जाम में डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा करंटली हु मिस्टर हरिवंश नारायण सिंह जे कि 12तम हैला जेडीयू रू से जनता दल यूनाइटेड हरिवंश नारायण सिंह हैला जे कि इन द एब्सेंस ऑफ योर वाइस प्रेसिडेंट हु इज द एक्स ऑफिशियो chairman of Rajya Sabha it should be actually deputy chairman not speaker deputy chairman right deputy chairman of Rajya Sabha speaker को जाने को चला correct it this should be can you करा whatever okay whatever so deputy chairman okay so deputy chairman also who Harivansh Narayan Singh and first deputy chairman के थिले Mr. S.V. Krishnamurti Rao Mr. S.V. Krishnamurti Rao okay नेक्स्ट स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली हला हमें देखि देले कोथरे इंडिया रो देखि देले ओडिशा रो भी देखि देबा ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली केते सीट अछि जानथियो 147 राइट एंड सो हु इज द स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली करंटली मिस्टर सूर्य नारायण पात्रो तो करंटली हमरो ओडिशा रे 16th असेंबली चलची तो तारो की अछन स्पीकर सूर्य नारायण पात्रो फर्स्ट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस रे के थिले स्पीकर ऑफ ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली मिस्टर नंदकिशोर दास तो नंदकिशोर थिले नंदकिशोर दास फर्स्ट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट असेंबली बिफोर इंडिपेंडेंस और प्री इंडिपेंडेंट असेंबली के थे मुकुंद प्रसाद दास फर्स्ट जोड़े कि तमरो आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस इतला फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली हैला जो थे कि तमरो के थिले सेकंड चीफ मिनिस्टर जो थिले आईएनसी रो तांको टाइम रे हैला सेकंड चीफ मिनिस्टर के थिले बिफोर इंडिपेंडेंस विश्वनाथ दास ओके विश्वनाथ दास से टाइम रे ये थिवे के योर मुकुंद प्रसाद दास ओके and eta mate important no nandakishore das is important first assembly after independence ro speaker thile in odisha legislative assembly ebe ki ochandi surya narayan patro basically current wala besi pachare first wala to mostly pachare ni current deputy speaker of odisha legislative assembly mr rajnikant singh so surya narayan patro and rajnikant singh 16th legislative assembly of odisha current leader of opposition of odisha legislative assembly mr pradipta kumar naik so leader of opposition ki ebe ochandi pradipta kumar naik je ki bjp ru ओके ओडिसा रो लीडर ऑपोजिशन पार्टी के बीजेपी लीडिंग गवर्नमेंट के करछ बीजेडी राइट ओके सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करंटली हु रामनाथ कोविंद जी हैला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ओके तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिकॉज़ न्यूली क्रिएटेड पोस्ट तो ता विषय के मो डिटेलली एक्सप्लेन करछि ओके करंटली हु द फर्स्ट सीडीएस जनरल विपिन रावत फर्स्ट एंड इनकम्बेंट मींस करंटली हु इज द like CDS Chief of Defense Staff केबे ऑफिस से एक्सेप्ट करथले 1st January 2020 रे so this is a 4-star officer similar as your army chief navy chief and air force chief hala acts as the principal military advisor to the defense minister on all tri services basically army navy and जो air force से माने तांकर चीफ माने इंडिपेंडेंटली एक्ट करिवे बट जति लाइक थिएटर कमांड रहिबो बेसिकली और ट्राई सर्विस कमांड जेमति कि तमर अंडमान निकोबार गोटे अछि एबे करंटली एंड currently he is planning to expand it हला बहुत सारे थिएटर कमांड पई ट्राई करछंदी जोदि कि बोथ आर्मी नेवी मतलब आर्मी नेवी एयर फोर्स मिसी की ही एक्शन नेबे ओके सो he heads that thing its creation was recommended प्रथम रेकमेंड के मिथला 2001 रे by a group of minister that was taken tasked with studying the Kargil review committee तो जब जानथियो कारगिल वॉर हेतला 1999 रे तो बेसिकली सेही टाइम रे कोन बेसिकली इंडियन आर्मी नेवी रो तो सेठी किछ रोल नथला बिकॉज़ लैंड होतला आर्मी एंड एयर फोर्स रे कोऑर्डिनेशन रे प्रॉब्लम हेतला तो ता पई गोटे रिव्यू कमिटी हला कारगिल रिव्यू कमिटी
तो से माने 2001 रे रिकमेंड कले कि देयर शुड बी अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जे कि एवरीथिंग मतलब तीन ट्राई सर्विस को कोऑर्डिनेट करिवो हला इवन 2012 रे नरेश चंद्र कमिटी भी रिकमेंड करथला कि देयर शुड बी अपॉइंटमेंट ऑफ ए परमानेंट चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी एज ए मिडवे टू एलिमिनेट अप्रीहेंशंस ओवर सीडीएस तो बेसिकली माने कहेंगे अपन कोन मतलब ऑल्दो 2001 रु हेलानी कि लाइक बहुत कंट्री रे कोन हुए कि आर्मी जदि गोटे लोक पाखरे बहुत पावर आ जाए जेंति कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तो से माने कोन करंती लाइक देयर इज ए चांस ऑफ कू हला मिलिटरी कू हे जाए जेमती कि तमर रिसेंटली तमे सुनथिबो म्यांमार रे हेछि मिलिटरी कू अफ्रीकन कंट्री रे काफी टाइम रे हुए हला तो मिलिटरी पर्सनल पाखरे बहुत जदि पावर आ जाए तले से माने प्रॉब्लम हुए तो बेसिकली से माने सही अप्रेंशन थिला बट करंटली एबे इंडियन गवर्नमेंट और यू कैन से डेमोक्रेटिक हमर जो चालची एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑलरेडी 75 इयर्स हम पूरा कर सलोनी हला एंड देयर इज नो मोर अप्रेंशन लाइक दैट हला बिकॉज़ मिलिटरी एंड सिविल गवर्नमेंट दे गो लाइक से माने सेपरेटली काम करछंती हला एंड इवन द सीडीएस एबे जो बना है तांको 5 स्टार बना है सेम रैंकिंग इज आर्मी चीफ नेवी चीफ एंड एयरफोर्स चीफ बना है because they will not report to anyone, they will directly report to the defense secretary or defense minister हला so बहुत पावर दिया जाए इनिशियली हला थिएटर कमांड को दिया ही चल दो हला तो नरेश चंद्र कमिटी से वाला गोटे रेकमेंड करले भी आफ्टर कारगिल रिव्यू कमिटी नरेश चंद्र कमिटी के बेस वाला 2012 रे एंड इवन द पोस्ट ऑफ सीडीएस वाज आल्सो रेकमेंडेड बाय लेफ्टिनेंट जनरल डीवी सकटकर जे के रिटायर्ड थिले लेफ्टिनेंट जनरल डीवी सकटकर अंको दर गोटे कमिटी ला डिसेंबर 2016 रे हला तो से भी रेकमेंड करथले तो फाइनली 2020 रे हमें हमारा फर्स्ट सीडीएस हमें पाइलो जनरल विपिन रावत एंड ही आल्सो हेड्स द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेयर्स तो under the union defense ministry there are 5 departments okay department of defense research and development right department of ex servicemen department of military affairs hala all these things are there so department of military affairs ko head korchundi your CDS is the permanent chairman of chief of staff committee okay he will be a member of the defense acquisition council के जे हेड करन देखिए डिफेंस मिनिस्टर बेसिकली जहां भी इक्विपमेंट किनवार अछि हला एमाने सैंक्शन करंती डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हेड के करंती डिफेंस मिनिस्टर दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर लिखि दवने डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लो के हेड करंती डिफेंस मिनिस्टर एंड द डिफेंस प्लानिंग कमिटी जाको हेड के करंती नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो बोथ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल एंड डिफेंस प्लानिंग कमिटी रो मेंबर होचंदी किए ये चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी और यू कैन से yeah your CDS military advisor to the nuclear command authority जंती जानथिबो चेयर के करंती प्राइम मिनिस्टर तांको पकनी फाइनल से अछि क्षेत्र भी एडवाइज की करछंदी और CDS ओके मैक्सिमम एज फॉर दिस पोस्ट इज 65 इयर्स बाकी जंती आर्मी चीफ नेवी चीफ एमानकर सब मैक्सिमम 62 इयर्स तो अकॉर्डिंग टू द एक्जिस्टिंग रूल्स एन आर्मी चीफ हैज अ टेन्योर ऑफ 3 इयर्स और अप टू द रिटायरमेंट एज ऑफ 62 इयर्स व्हिच इज अर्लियर हला तो बेसिकली दिस इज द रूल करंटली and he will not be eligible to hold any government office after resigning as the CDS तो CDS हला पर आगे गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर परियोनी बट आफ्टर आर्मी चीफ नेवी चीफ एंड ऑल बिकॉज़ 62 इयर्स से समन मोस्टली रिटायर हे जानती एंड दे मे बी अपॉइंटेड एज द CDS आल्सो जेमति कि योर जनरल बिपिन रावत या पूर्व कोन थिले CDS पूर्व योर he was the army chief so chief of Indian army or chief of army staff is the exact term according to Army Act 1950 chief of the army staff hela COAS general Manoj Mukund Narvane he is the 27th chief of army staff okay first chief of army staff was general Maharaj Shri Rajendra Singh ji Jadeja जे कि 1st April 1955 रो 14th May 1955 basically 55 रे थिले हला 1st April 1955 so first chief of army staff is general Maharaj Shri Rajendra Singh ji Jadeja याद रख लो General Sir Francis Robert Roy Bucca. Okay, basically before Chief of Army Staff term, basically से post पर कौन था Chief of Army Staff and Commander in Chief Indian Army. हला तो ये जो तीन जन ना अछंती General Sir Francis Robert Roy Bucca or whatever. हला जे कि 21st June 1948 to 15th January 1949 पर्यंत थिले. Then General KM Kariappa was the first Indian to hold this post. हला तो सी चेंज ऑफ गार्ड के भेजला 15th जनवरी 1949 से पई 15th जनवरी हम कौन सेलिब्रेट करू आर्मी डे इन इंडिया सो आर्मी डे इन इंडिया इज 15th जनवरी 1949 तो सेट दिन प्रथम थर पई इंडियन लाइक आर्मी रो हेड के गले इंडियन जनरल जने केएम करियप्पा
General Maharaj Sri Rajendra Singh Ji Jadeja is the third one to hold this post of Chief of Army Staff and Commander in Chief Indian Army. ହେଲା ତ ଏବେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛେ ଆମେ ଚିଫ ଅଫ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ ତା ପୂର୍ବରୁ ତା ନମେନକ୍ଲେଚର ଥିଲା ଚିଫ ଅଫ ଆର୍ମି ଷ୍ଟାଫ एंड कमांडर इन चीफ तो प्रथम किए थे तार से हिसाब रे रॉबर्ट रॉय बुचर देन केएम करियप्पा देन राजेंद्र सिंह जी जडेजा तो ता पूर्व कोन कहउतला कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी ओके इतना ही कहउतला हैला तो सतले किए थे सर रॉबर्ट समथिंग समथिंग हैला मैकडोनाल्ड लॉकहार्ट देन रॉबर्ट रॉय बुचर बेसिकली दिस थिंग्स यू डोंट हैव टू रिमेंबर just this name is important KM Kariappa and yes Robert Roy Bucker also important okay so this is the thing same case for even your naval staff chief of naval staff currently who is Admiral Karambir Singh is the 24th your chief of naval staff तो यार भी से बड़ा कथा थिला chief of naval staff and commander in chief and all like that so Admiral Sir Charles Thomas Mark PJ whatever first थिले जे कि 26 जनवरी 1950 रु 13 अक्टोबर 1950 पर्यंत थिले सर चार्ल्स थॉमस मार्क पीजे ओके व्हाटएवर एंड एडमिरल रामदास कटारी वाज द फोर्थ टू हेल्ड दिस पोस्ट फर्स्ट इंडियन तो फर्स्ट इंडियन टू हेल्ड दिस पोस्ट जंदी सेठी थिले आपरो केम करियप्पा सेठी नेवी रे किथिले रामदास कटारी नेवी डे हम केवे सेलिब्रेट करछे इंडिया रे 4th डिसेंबर व्हाई बिकॉज़ से टाइम रे तमरो 1971 रे चलथिला इंडो पाक वार जोतरे कि तापरे बांग्लादेश लिबरेशन हेतला तो ऑपरेशन ट्राइडेंट लॉन्च करथिला इंडियन नेवी सेतरे कि से कोन करथले चारिटा पाकिस्तानी वेसल को सिंक कर देथिले अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल हैला तो 4th डिसेंबर से पे सेलिब्रेट करा जाए इज नेवी डे ओके देन चीफ ऑफ एयर स्टाफ के एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया currently 26th and just this September last to I think Vivek Ram Chaudhary will take this post okay तो एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया भी याद रख लो 26 वाला एंड देन विवेक राम चौधरी विल बी द 27th ओके नेवी रो जे थिले एडमिरल करमबीर सिंह जे 24th एंड योर आर्मी रो जे थिले योर मनोज मुकुंद नरवणे अछंती जे 27th 24th करमबीर सिंह एंड इवन विवेक राम चौधरी विल 27th बट एबे जे आरकेएस भदौरिया अछने 26th एयर फोर्स डे इंडिया हमें सेलिब्रेट करछो केबे 8th अक्टोबर तो हमें 15th जनवरी सेलिब्रेट कलो आर्मी डे नेवी डे हला 4th डिसेंबर एयर फोर्स डे केबे हला 8th अक्टोबर हला एयर फोर्स डे हमें सेलिब्रेट करू हिंडोन बेसिकली मिलिटरी बेस जोडा कि तमरो अछि उत्तर प्रदेश रे हिंडोन ओके आई थिंक हिंडोन को जगह अछि उत्तर प्रदेश बेसिकली आई थिंक जल्दी चेक कर दो हिंडोन मिलिटरी बेस तक पहुंचे गाजियाबाद और लखनऊ हिंडोन just let me check okay हिंडोन मिलिटरी बेस याद रखना हला सर चेक करिए देखो उत्तर प्रदेश अछि यति मन अछि बाकी मन कोन एग्जैक्टली कोड अछि उत्तर प्रदेश को जगह रे ओके सो एयर फोर्स डे के बदले 8th अक्टोबर 4th डिसेंबर हला नेवी डे 8th अक्टोबर हला योर एयर फोर्स डे बिकॉज़ 8th अक्टोबर 1932 रे एटा स्टार्ट हितला एयर फोर्स डे एयर फोर्स इंडियन एयर फोर्स स्टार्ट हितला ओके एटा के भलो आसनी आ गोटे फोटो नि आइछि 22 चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंपोर्टेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 324 हला so who is the current incumbent chief election commissioner Mr Sushil Chandra 24th तांको पूर्व थिले सुनील अरोड़ा so Sushil Chandra is the current or 24th chief election commissioner Mr Sukumar Sen was the first chief election commissioner and Sushil Chandra को भी असिस्ट करचोंदी राजीव कुमार एंड अनूप चंद्र पांडे बेसिकली इनिशियली जणे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थिले तांको असिस्ट करनथले बट आफ्टर 1989 onwards there are two election commissioners assisting the chief election commissioner तो तांका टर्म केते एटा गोटे constitutional post because it should be independently conduct the election of your prime minister MLA MP and all even vice president so तांको basically protection दिया हिची तो तांका टर्म हला 6 years and up to 65 years of age or up to 65 years is whatever is earlier हैला तांको removal is like similar as the supreme court judge right so कंप्यूटर तो की हेले एबे करंटली के सुशील चंद्र and first chief election commissioner is Sukumar Sen CAG comptroller and auditor general of India article 148 very important hello he is the protector of public purse right so currently Mr Girish Chandra Murmu 14th hello he is from Mayurbhanj Odisha
So like pride of Odisha. He was the also first lieutenant governor of your which one? Jammu Kashmir Independent Union Territory, right? Jammu Kashmir is divided line and Union Territory hela first तांको appoint करा इतला GC मुर्मू को lieutenant governor हला. So एबे के lieutenant governor अछंती जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख रे comment section रे को हला CAG. So प्रथम के थे CAG तले V Narahari Rao. First CAG is V Narahari Rao and first CEC is Sukumar Sen, right? Okay. So CAG हो गया. CAG रवि तुम्हारा same as chief election commissioner तंकर जो term 6 years or up to 65 years of age, whichever is earlier. Registrar General and Census Commissioner of India is Mr. Vivek Joshi. So these are some like, see, these things you have to memorize, no other way. Very, very important things. In the CEC, Hogala, CAG Hogala, CGI, these are very important. You have to remember only. And these names are keep on changing. You have to keep on updating. Okay. So Registrar General and Census Commissioner of India is Mr. Vivek Joshi. Basically, this thing was formed, Registrar General and Census Commission formed in 1961 under the Ministry of Home Affairs. Basically, the census conduct every 10 years, right? Central Vigilance Commissioner CVC Act के हला 2003 statutory status actually already exist करथला but statutory status मिलला 2003 रे under CVC Act 2003. So Mr. Suresh N Patel is the current or 18th Chief Vigilance Commissioner. के Suresh N Patel. First यदि CVC पचारियो किए Mr. Nitur Srinivas Rao. So current chief CVC is Suresh N Patel. N Patel. Okay. So केबे CVC established इतला set up इतला February 1964 on the recommendation of the Committee on the Prevention of Corruption headed by Sri K Santhanam. तो Committee on Prevention of Corruption head किए करले K Santhanam committee को आजे जहां का recommendation दुटा body आस्थिला basically CVC and your CBI. Hello. They inquire into offences under the Prevention of Corruption Act 1988. The Supreme Court in the judgment of Vinith Narayan and others versus Union of India 1997 gave direction that CVC should be given a supervisory role of a CBI. Okay. So Supreme तो तीन ताजी हम जान CVC रे basically initially এটা 1964 established but statutory नथिला 2003 रे statutory हला and प्रथम के CVC chair basically commissioner थिले Chief Commissioner Nitur Srinivas Rao, एबे की अछंती Suresh N Patel. Okay, so and we know about Santhanam Committee, Vinith Narayan case. हाँ, Vinith Narayan case versus Union of India 1997 रे Supreme Court कहला कि CVC should be given a supervisory role of a CBI. तो basically CBI को एबे के control करछंती. सेटा में पढ़ियो फ्यूचर basically CVC गोटे controlling अछि body and your Lokpal भी तांको करछि control plus your administrative control capacity DOPT पाखरे अछि हला Department of Personnel and Training. And they also take care about the Whistleblowers Protection Act 2014. So the Whistleblowers Protection Act अनुसार CVC रो duty हला like whistleblower identity को like hide करिबा and all. Lokpal Lokaयुक्त Act 2013 भी CVC को किछि पावर दोछ. The term केते है CVC रो 4 years or up to the 65 years of age. तो बाकी हमें CEC and Chief Election Commissioner and CAG देखिलो 6 years or up to 65 years but एठी हला 4 years. हला Chief Information Commissioner एटा तमरा आस्थिला अंडर द व्हिच एक्ट इंफॉर्मेशन कमिशन हला आरटीआई एक्ट जोडा कि 2005 रे आस्थिला हला. सो चीफ इंफॉर्मेशन कमिशनर हला करंटली हु यशवर्धन कुमार सिन्हा इज द 7th चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर यशवर्धन कुमार सिन्हा एंड एबे सीबीसी के थिले चीफ सुरेश एन पटेल. ओके एंड फर्स्ट के थिले वाजाहत हबीबुल्लाह. ओके द फर्स्ट वन फर्स्ट सीआईसी को एक्ट अनुसार आस्थिला आरटीआई एक्ट 2005. The term कहते हैं is vested by the central government. तो basically recently এটা amend ହେଇଛି. तो एबे तांको basically previously it was similar as your CEC only but एबे तांको central government time to time तांको prescribe करिवो केते years 3 years एबे दिया ହେଇଛି और 65 years whichever is earlier. तो basically एमा जो appointment किए करे CIC को president समस्त को almost president appoint करंती but या पे ଗୋଟେ recommendation committee अछि under the recommendation of the Prime Minister of India, the leader of opposition in the Lok Sabha and a union cabinet minister nominated by the Prime Minister. तो तीन जनकर recommendation अनुसार गोटे ने आसीबो जहा को भी अपॉइंट करे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोक सभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर CIC. National Security Advisor, very very important. So currently he is the most important officer
under the government. Okay, Mr. Ajit Doval, the IPS officer, is the 5th NSA of India. Mr. Brajesh Mishra was the IFS, was the first NSA under the Vajpayee government. Tanko time started la. So NSA is the member of Defense Planning Committee. So Defense Planning Committee chairperson, jahare bhi member thandi your CDS. Strategic Policy Group chairperson also Defense Planning Committee, Strategic Policy Group, and National Security Council, the secretary. National Security Council ro head karanti Prime Minister, secretary hele NSA. Chief Advisor to the Prime Minister of India on National Security Policy and International Affairs as well. And tanko rank kono same rank as Union Cabinet Minister. So NSA rank is same as Union Cabinet Minister. Okay, not secretary, Cabinet Minister. 28th, Chief Economic Advisor. Mr. Chief Economic Advisor to the Government of India, Mr. Krishna Murthy Subramaniam. 17th. So Chief Economic Advisor term kehte hain 3 years. Mr. J.J. Anjaria was the first Chief Economic Advisor to the Government of India. So Chief Economic Advisor to the Government of India is Mr. Krishna Murthy Subramaniam. Currently, okay, Krishna Murthy Subramaniam is the 17th Chief Economic Advisor. Prathama ke thile J.J. Anjaria. Our term kete 3 years. So Chief Economic Advisor rank hala equivalent to the Secretary to the Government of India. Ex officio cadre controlling authority of the Indian Economic Service, head of the economic division of the Department of Economic Affairs under Finance Ministry. So until 2009, the Chief Economic Advisor position was a UPSC appointment, but ebe ke appointment tomar jo cabinet achi appointment committee hala se appoint korchi. Until 1970s, almost all the Chief Economic Advisors are members of the IES. IES is Indian Economic Service. Produces the Economic Survey of India, preceding the Union Budget. So तुम जानते हो जोड़ा कि ये Union Budget तुम्हारे जो Finance Minister basically February 1st रे present करंदी ता पूर्व दिन ही ता पूर्वरु ता last working day रे ता पूर्वरु Economic Survey of India produce करंदी क्या Chief Economic Advisor. Principal Scientific Advisor to the Government of India is Dr. K. Vijay Raghavan. So Principal Scientific Advisor के हले Dr. K. Vijay Raghavan was the 3rd Principal Scientific Advisor to the Government of India. It is currently a secretary level position created by the Atal Bihari Vajpayee government. So NSA भी ये करते start and even Principal Scientific Advisor PSA. हाला. So currently who is heading this post? Dr. K. Vijay Raghavan. So Principal Scientific Advisor also post started under the Vajpayee government. So set time रे एटा भी cabinet rank position थिला जेमति कि NSA थिला but एबे एटा secretary level कर दिया छी. पहला first PSA तल के थिले Dr. IBJ Abdul Kalam and second के थिले second okay almost 16 years he held this post Raj Gopal Chidambaram. Currently who is heading this? K. Vijay Raghavan. So K. Vijay Raghavan is the current PSA, Principal Scientific Advisor. Scientific Advisor to the Defense Minister Mr. G. Satish Reddy. He is the DRDO Chief or DRDO Chairman, you can say, Secretary of the Department of Defense Research and Development. Okay, now these are also very important positions. Cabinet Secretary to the Government of India Mr. Rajiv Gauba, like IS officer man ko bhitar to top position you can say. Okay, Cabinet Secretary to the Government of India, but currently NSA has become more powerful. Ajit Doval ji. Okay, so Rajiv Gauba, Cabinet Secretary to the Government of India. Chief Secretary to the Government of Odisha Mr. Asit Kumar Tripathi. Even tanko gote mesi powerful achen ki your 5T secretary hala ke 5T secretary very important comment section ko 5T secretary hala 5T. Foreign Secretary to the Government of India is Mr. Harshvardhan Shringla. So Cabinet Secretary hola Rajiv Gauba, Odisha ro jodi pachar Chief Secretary Asit Kumar Tripathi. Foreign Secretary to the Government of India Mr. Harshvardhan Shringla. Finance Secretary to the Government of India is Mr. T.V. Somanathan. तो कैबिनेट सेक्रेटरी देश के बाद फॉरेन सेक्रेटरी किए गए हर्षवर्धन श्रृंगला जी की असिस्ट करछन योर फॉरेन सेक्रेटरी फॉरेन मिनिस्टर को. फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मिस्टर टीवी सोमनाथन. टीवी सोमनाथन जब तुम पर पैसा थियो तुम टीवी किन पारियो तो से बड़ा मन रखदा फाइनेंस को टीवी हैला. एंड फॉरेन बोलले हमको बहुत हर्ष हुए तो हर्षवर्धन तुम कैन से. डिफेंस सेक्रेटरी तो डिफेंस माने अजय दरकार विजय हवा दरकार हैला. अजय कुमार डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कुमार. इवन होम रे भी तुम्हारा अजय हवा दरकार. होम सेक्रेटरी इज आल्सो अजय कुमार भल्ला हैला. दे आर डिफरेंट नेम्स. अजय कुमार इज फॉर डिफेंस and Ajay Kumar Bhalla is another person for home secretary हैला. So in this way you can remember. Okay, Director Generals of the Central Armed Police Forces. Okay,
So this mostly it will not come in the exam or in your ASO, but these things are you should know. Other exams it can come. BSF. So basically जो central and police force होची ता under बहुत बड़ा forces होची जवान की basically your first line of defense in the border of Indian state ହେଲା तो इंडिया रो जो different border करची land border तो सेठी गोटे गोटे प्रकार force सेमान ताको कोन करछन protection दोचंती so during peace time एमाने सेठी border रे patrolling करंती and जतले युद्ध हो सेतही army navy and your other air force they come to play ହେଲା तो first line of defense is played by the CAPF ହେଲା so border security force BSF तो बेसिकली ऑल दिस फोर्सेस आर लाइक गोटे गोटे वार पर ही हेची ऑलमोस्ट हला सब गोटे गोटे वार सहित रिलेटेड अछि 1965 रे तो इंडो पाक वार हेतला हला तो 1 डिसेंबर 1965 रे बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एस्टैब्लिश हेतला मोटो हला तारो ड्यूटी अनटू डेथ डीजी एबे के अछंती पंकज कुमार सिंह सो करंट डायरेक्टर जनरल इज पंकज कुमार सिंह ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केबे एस्टैब्लिश 1965 मोटो कोन हला ड्यूटी अनटू डेथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ जे माने कि मेनली इंटरनल सिक्योरिटी के देखंती इंडिया रे हाँ so it was established in 27th July 1939 तो 1939 रे 27 जुलाई एटा स्टार्ट हितला बेसिकली जो प्रिंसली स्टेट मन को असिस्ट करिया पई ब्रिटिश गवर्नमेंट बनितला एंड रकम मोटला सर्विस एंड लॉयल्टी करंट डीजी इज कुलदीप सिंह so these names are very important बीएसएफ डायरेक्टर जनरल के पंकज कुमार सिंह सीआरपीएफ रो के होले कुलदीप सिंह हला तांकर आउडे एडिशनल चार्ज अछि जोडा के मैं परे पढिया कुलदीप सिंह करो Okay, so Kuldeep Singh is the CRPF Director General. CISF, है तो हाँ yes BSF वाले लेके बोली वाली BSF कह देबी you can listen it. तो BSF कोडी बॉर्डर पर कोडी पेट्रोल करंती और इंडो पाक वार पर हेतला तो कोडे बॉर्डर करियो हैला पाकिस्तान बॉर्डर तो सेतले पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थिला जोटा कि ईस्ट वाला बे कोन हला बांग्लादेश तो बोथ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर को के माने पेट्रोल के माने सिक्योरिटी दोचंती बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ तमर कहले इंटरनल सिक्योरिटी CISF बेसिकली तमर जो भारत रे जति की इंपोर्टेंट स्ट्रेटेजिक अछि इंडस्ट्रीज जेंति एटॉमिक इंडस्ट्रीज और योर न्यूक्लियर हला न्यूक्लियर हेगला डिफेंस रिलेटेड थिंग्स हेगला एयरपोर्ट्स जोटा की स्ट्रेटेजिक एरियाज अछि हला सेटिंग को ता प्रोटेक्शन के दियंती CISF हला तो एटा के बेस हितला 10th मार्च 1969 तांकर मोटला प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी सुधीर कुमार सक्सेना इज द करंट डायरेक्टर जनरल सुधीर कुमार सक्सेना इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस सो तिब्बत और कोडी अछि चाइना रे करंटली हला तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन तो चाइना बॉर्डर की करियो इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स बॉर्डर पुलिस हला तमर जेमति जानथि चाइनीज एग्रेशन हितला इंडो सिनो वार और इंडिया चाइना वार के हितला 1962 तो जस्ट तापर हिटा हितला 24 अक्टोबर 1962 ताकर मोटो हला शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा हला करंटली हु इज द योर Director General of ITBP Sanjay Arora National Security Guard NSG जेनको भी कहा जाए द ब्लैक कैट्स हला तांकर मोटो हला सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा currently Mr. M.A. Ganapati is the Director General of NSG raging day हला 16th October 1984 on the like just following the Blue Star Operation Blue Star जोड़ा कि Indian Army करथिला कोठी your अमृतसर गोल्डन टेंपल जो खालिस्तान प्रो खालिस्तानी जो लोक थिले सेमानता भीतर लुचि रहितले योर अमृतसर गोल्डन टेंपल रे सेडी माने बेसिकली इंडियन आर्मी करथिला ऑपरेशन बट बेसिकली आर्मी वाज नॉट वेरी मच ट्रेन्ड रिगार्डिंग दिस थिंग्स दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस तो काफी डैमेज हितला से ऑपरेशन रे जो टीम भी इवन इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड तो बेसिकली ऑपरेशन ब्लू स्टार भले जो जो प्रॉब्लम हितला ताकू ये करिया पे गोटे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हला स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जे माने कि बेसिकली एंटी टेररिज्म एक्शन करिवे तो 16 अक्टोबर 1984 रेज हितला बट फाउंडेशन जे तन कहजिवो केबेला 22 सितंबर 1986 माने एक्ट असला पार्लियामेंट्री एक्ट NSG एक्ट 1986 तो 22 सितंबर बट रेजिंग डे में सेलिब्रेट कर चुके बा 16 अक्टोबर हला तो किछि यस दिस इज मॉडल्ड ऑन द एलीट एंटी टेरर फोर्सेस GSG 9 ऑफ जर्मनी एंड SAS ऑफ द UK तो सही अनुसार एटा को हितला तयारी हला सो अब त किछि इंपोर्टेंट ऑपरेशन जेंति कि ब्लू स्टार मु कहली एटा ऑल्दो NSG नथिला ता पर ही स्टार्ट हिला NSG रो एटा वन इंडियन आर्मी रे थिला ऑपरेशन ब्लैक थंडर इज वेरी इंपोर्टेंट अंडर दिस दे फ्लैश आउट द प्रो खालिस्तानीज फ्रॉम गोल्डन टेंपल अमृतसर आ जहां जे बंची थिले तांको बाहर कले ऑपरेशन ब्लैक थंडर तो ब्लू स्टार एंड ब्लैक थंडर बोथ हैपेंड साइमल्टेनियसली मतलब वन बाय वन देन ऑपरेशन अश्वमेध इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 4427 हाईजैक हितला
जम्मू कश्मीर दिल्ली मजा मजी तो ऑपरेशन अश्वमेध करथिले माने सो ब्लैक थंडर जान लो अश्वमेध जान लो देन वज्र शक्ति ऑपरेशन ऑपरेशन वज्र शक्ति अक्षरधाम टेंपल अटैक गांधीनगर गुजरात 2002 अक्षरधाम टेंपल से अटैक हेतला जो तमरो स्वामी नारायण टेंपल कहा जाए एंड ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो सो ब्लैक टोर्नाडो 26/11 मुंबई 2008 टेररिस्ट अटैक मुंबई टेररिस्ट अटैक 26/11 वेरी फेमस सो दिस वाज दिस एई टाइम रे ही एनएसजी को बेसी लोग जानि थिले ब्लैक टोर्नाडो लाइक करंट जनरेशन यू कैन से हला ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो देन सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जे कि का को बॉर्डर करछि हमें जानलो बीएसएफ हला पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हेगला आईटीबीपी हेगला तमरो कोडी चाइना सशस्त्र सीमा बल विल बी नेपाल इंडो नेपाल ओपन बॉर्डर बट सेठी माने अछंती सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कहछि तांकर रेज हित लागबे से आफ्टर इंडो चाइना वार ओनली इंडो साइनो वार चाइना वार कहजिबन इंडो सिनो वार बेसिकली 20th डिसेंबर 1963 तांकर केबे हला तांकर मोटो हला सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड सी इंडिया नेपाल ब्रदरहुड भलिया नदी सो से भलिया तांको दिया छि मोटोटा सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड so currently who is the director general kumar rajesh chandra एनएसजी रो केले एमए गणपति सशस्त्र सीमा बल हला कुमार राजेश चंद्र आईटीबीपी संजय अरोड़ा सीआईएसएफ सुधीर कुमार सक्सेना सीआरपीएफ कुलदीप सिंह बीएसएफ पंकज कुमार सिंह हला एको बार-बार रिवाइज करे पड़ो न मन रहबनी हला असम राइफल्स 24th मार्च 1835 सी असम राइफल्स इज अ वेरी स्पेशल फोर्स बिकॉज़ एको दुईटा मिनिस्ट्री एको ये करंती कंट्रोल करंती हला डिफेंस मिनिस्ट्री एंड योर होम मिनिस्ट्री एज वेल हला होम मिनिस्टर फाइनेंस वगैरह संभाले बाकी अदर थिंग्स मतलब ताको जो आसंती रिक्रूटमेंट वगैरह इंडियन आर्मी हला तो तांकर हला कोन हला मोटो सेंटिनेल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट 1835 for 24th मार्च ओल्डेस्ट सीएपीएफ यू कैन से 1835 स्टार्ट हितला असम राइफल्स सेंटिनेल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हमारा मोटो हला करंटली हु इज द थिंग योर व्हाट यस डायरेक्टर जनरल दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर तो देखो सी बिकॉज़ आर्मी को बेसिकली इनकर एडमिनिस्ट्रेशन संभालची तो से पय लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्र नायर बाकी सब सीएफयू रो छथि जनरली आईपीएस ऑफिसर थान हैला सो दिस इज द डिफरेंस देन स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सबला न्यूज रे थाय हैला स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जे माने का को सिक्योरिटी दियंती और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट एंड हिज फैमिली मेंबर्स ता घरे बाहर जोठी भी जानती सो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के फॉर्म हितला 1988 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एसपीजी एक्ट बेसिकली प्रथम इनिशियली फॉर्म हितला 8th अप्रैल 1985 बिकॉज़ तुम जंती कहली ऑपरेशन ब्लू स्टार हितला तापर ही बिकॉज़ ऑफ दैट जो सिख कम्युनिटी दे आर वेरी एंग्री upon इंदिरा गांधी बिकॉज़ तांकर डायरेक्शन में इंडियन आर्मी इट वेंट टू द योर गोल्डन टेंपल जो कि गोल्डन टेंपल का डैमेज भी हितला ऑपरेशन ब्लू स्टार रे सो तांकर असैसिनेशन हितला इंदिरा गांधी करो इन अक्टोबर 1984 तांकर ही सिक्योरिटी गार्ड जे थिले सिख कम्युनिटी रो दु जण से माने ताको गोली करके हत्या करथिले तो से ता पर ही जस्ट 18th फरवरी 1985 रे गोटे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गोटे कमिटी सेटअप कला इट इज बिरबल नाथ कमिटी जे के रेकमेंड कला फॉर द एसपीजी तो बिरबल नाथ कमिटी आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी हला के ताको कमिटी को बनिला मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो केबे फॉर्मेशन हला 8th अप्रैल 1985 बाकी ताको स्टैट्यूटरी बैकिंग मिलला केबे 1988 रे करंटली एटा रिसेंटली 2019 रे को अमेंड कराइतला हला तो करंटली ओनली प्राइम मिनिस्टर ही एको बेसिकली एसपीजी प्रोटेक्शन मिलुची प्राइम मिनिस्टर को हला तो एक बेसिकली प्राइम मिनिस्टर जतले प्राइम मिनिस्टर पोस्ट हरे बसिबे इनिशियली 5 वर्ष पर्यंत तांको भी मिलिबो एक्स प्राइम मिनिस्टर को हला सो बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी तांको प्रति केते विपद रहिछि से अनुसार आईबी गोटा रिपोर्ट दबो that can be extended as well or these things are there okay intelligence agencies so india रे बहुत सारा इंटेलिजेंस एजेंसी अछि तार अलग अलग काम रहिछि so ता विषय में हम देखि देबा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए वेरी वेरी इंपोर्टेंट दिस वाज फॉर्मड आफ्टर द 26/11 मुंबई टेरर अटैक है ना तो मुंबई टेरर अटैक परे एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हेतला जहार की मेन काम कोन सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी काउंटर टेररिज्म एक्शन माने करिवे हैला जोड़ा कि प्रीवियसली बहुत सारे एजेंसीज मिसी करथले बट एबे एनआईए ओनली काम कोन हला काउंटर टेररिज्म केबे फाउंड हला 31 दिसंबर 2008 फाउंडर के राधा विनोद राजू बिकॉज़ यू आर द फर्स्ट एनआईए चीफ हला राधा विनोद राजू करंटली हु इज द चीफ एडिशनल चार्ज रखिसंदी कुलदीप सिंह जे कि सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल ही इज टेकन द एडिशनल जनरल चार्ज ऑफ एनआईए एज वेल ओके इंटेलिजेंस ब्यूरो केबे एस्टैब्लिश ला 1887
तांकर कोन हला मोटो ऑलवेज अलर्ट सी एनआईए रो किछि मोटो पाइलिनी जति किछि के जानिथिबे कि मते लाइक कमेंट सेक्शन कैन दे कैन टाइप फॉर अदर्स बेनिफिट एज वेल सो इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेतला 1887 फाउंड हेतला तारो ये हला कोन ऑलवेज अलर्ट जागृतम अहर्निशम Mr. Arvind Kumar is the current IB chief, or you can say Director General of Intelligence Bureau, who Mr. Arvind Kumar. Central Bureau of Investigation, जे कि सब बड़े न्यूज था CBI, है ना? केबे established ला 1941 as per the Special Police Establishment Act, but currently it is under the 1946 Delhi Special Police Establishment Act. तो Delhi Special Police Establishment Act 1946 अंडर CBI एडमिनिस्ट्रेशन होची, हला ताको के एडमिनिस्ट्रेशन करची डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग बाकी सीबीसी एक्ट 2003 अनुसार सीबीआई रो जे चीफ तांकू 2 इयर्स प्रोटेक्शन मिलची 2 इयर्स ऑफ टर्म प्रोटेक्शन सीबीसी एक्ट अनुसार एंड लोकपाल लोकायुक्त एक्ट अनुसार किए तांको अपॉइंटमेंट करिवे अपॉइंटमेंट कमिटी सेटा कोहाई छी तो अपॉइंटमेंट कमिटी अपॉइंट तो करिवे योर प्रेसिडेंट बट बेसिकली अपॉइंटमेंट कमिटी को हेड करिवे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा or the leader of single largest party हला because leader of opposition पाई कोन at least 10% सीट तुमको ऑक्युपाई करथा दरकार तो currently लास्ट लोकसभा इवन करंट लोकसभा रे के लीडर ऑफ ऑपोजिशन पोस्ट नहांती सो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ए सुप्रीम कोर्ट जज रेकमेंडेड बाय द सीजीआई तो तीन जण रहले मेंबर फॉर द सीबीआई अपॉइंटमेंट तो करंटली के हेले तमरो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हिची मिस्टर सुबोध कुमार जायसवाल जोतरे के सीजीआई एनवी रामाना वाज आल्सो मेंबर हैला तो सुबोध कुमार जायसवाल करंटली सीबीआई चीफ फाउंडिंग डायरेक्टर के थे डीपी कोहली इवन एटा हमें पढ़थलो सीबीसी पाखरे संतनम कमिटी रो रिकमेंडेशन रे ही एस्टैब्लिश इला 1963 64 रे सेतले होम मिनिस्ट्री रिजोल्यूशन अनुसार हितला एटा सी 1946 अनुसार थिला बट सीबीआई ना हला के होम मिनिस्ट्री रिजोल्यूशन अनुसार 1 अप्रैल 1963 तो सीबीआई को डायरेक्टली किछि स्टैट्यूटरी बॉडी को हाजिबनी नाइदर स्टैट्यूटरी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी it takes power from the DSP Act 1946 even CVC Act 2003 Lokpal Lokayukt Act 2013 हला so जदि DSP ऑप्शन थिबो go for DSP 1946 हला इनिशियली के थिले DP कोहली was the first founding director and currently who is heading this Subodh Kumar Jaiswal and appointment committee के अछंती prime minister leader of opposition Lok Sabha or the leader of the single largest party chief justice of India or any supreme court judge recommended by him then research and analysis wing raw रो तमे जानथिबो जेमति आईबी तमरो भारत भितर ही से मतलब इंटेलिजेंस गैदर करंती इंडिया भितर आ रो कोडी काम करे इंडिया बाहर बेसिकली हैला जेमति कि तमरो अछि सीआईए ऑफ यूएसए है ना मोसाद ऑफ योर इजराइल बेसिकली मोसाद टू ट्रेनिंग मोसाद ही रिसर्च एनालिसिस एस्टैब्लिश करे पई हेल्प करथला इंडिया को ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम 1968 21 सितंबर 1968 इट वाज एस्टैब्लिश्ड अगर मोटो हला लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड धर्म रक्षति रक्षतः हला संस्कृत रो आछि धर्म रक्षति रक्षतः लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड तो करंटली हु इज द रॉ चीफ मिस्टर सामंत गोयल रॉ चीफ को जाने रॉ सेक्रेटरी को जाए हु इज द दिस थिंग मिस्टर सामंत गोयल सो सामंत गोयल इज द रॉ सेक्रेटरी रिसर्च एनालिसिस विंग आईएसआई तो तुम सब जानथियो इंडिया रो सॉरी पाकिस्तान रो सबले किछ ना किछ करथांदी तो रो हेगला सीबीआई रो तुम जानले सुबोध कुमार जायसवाल आईबी रो हला अरविंद कुमार एनआईए हला कुलदीप सिंह एडिशनल चार्ज रखछन सिए जे कि एक्चुअली सीआरपीएफ रो डीजी कुलदीप सिंह हला सामंत गोयल हला रो एंड फाइनली डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस 1957 एस्टैब्लिश हितला इंडियाज अपेक्स एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशन एजेंसीज तो हु वाज द डायरेक्टर जनरल मिस्टर बलेश कुमार हला सो डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस रो जे कि बेसिकली एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज को बेसिकली ये करंती इंटेलिजेंस गैदरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशन मिस्टर बलेश कुमार तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर दिस थिंग हु इज हु और अपॉइंटमेंट थिंग हैला सो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल what comments and like and share okay so these things are there and all the best for your ASO exam जदि क्या even like maths question I had solved previous last 2 years question maths English if you need that also you can comment in the YouTube or in the your Telegram channel okay I'll send this notes to you your thing also what in the Telegram as well
ओके सो बेसिकली एटा मु एबे ही बनै छी नोट्स टा को डिजिटल करिया पड़िबो सो टाइप करिया पे टाइम नहीं सो आई हैड गॉन थ्रू लाइक दिस ओनली सो दिस इज द पीडीएफ हाउ टू सेंड दिस इसको तो पहले स्टॉप करो ओके बिल्कुल नहीं हो रहा है ठीक है ये देखो हमारा क्या है चैनल है ओपीएससी एग्जाम रिवाइज विथ मी है ना 47 नंबर्स आर देयर करंटली ओपीएससी एग्जाम रिवाइज विथ मी है ना तो आगुर जो ओडिशा हिस्ट्री नोट्स ला भी एथरे दिया है प्लस जहां भी नेक्स्ट तुम्हारा वीडियो बनाबो ता नोट्स भी एठी दे दिया जिवो ओके सो आई विल सेंड दिस नोट्स हियर आल्सो सो यू कैन गेट इट फ्रॉम हियर ओके सो आउ जदी किसी कमेंट थिवो तो मैं मते कहबो स्टॉप हियर ओके हरे कृष्णा जय जगन्नाथ।